अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं इंतहाई अहम मामले ते बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां। वाज़ रहे त सिंध में कराची डिवीजन ऐं हैदराबाद डिवीजन में बलदियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो अञा ताईं मुकमल न थी सघियो आहे। इन हवाले सां सिंध हाई कोर्ट में अॼु ॿुधणी पिण थी। अदालत पारां IG सिंध खे पिण इन हवाले सां तलब कयो वियो, इलेक्शन कमिश्नर खे तलब कयो वियो। अदालत पारां पुछाणो कयो वियो त कहिड़ी रुकावट आहे, फोर्स जी कमी आहे या कहिड़ा मामला आहिनि। जंहिं ते एडवोकेट जनरल सिंध ॿुधायो त ॿ अहम मसइला आहिनि। पुलिस ऐं रेंजर सिक्योरिटी फराहम करण खां लाचारी ॾेखारी आहे। एडवोकेट जनरल सिंध चयो त इलेक्शन कराइण इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे, सूबाई हुकूमत जो कमु न आहे। हू पहिरें मरहले जी इलेक्शन पिण कराए चुका आहिनि। इन हवाले सां अदालत रिमांड ॾिना त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुमनि जी भञकड़ी छो थी रही आहे। इलेक्शन जेकॾहिं यकदम नथी कराए सघिजे त पोइ मरहलेवार पिण इलेक्शन कराइजे, पर इलेक्शन कराइण तमामु घणी ज़रूरी आहे। चीफ जस्टिस पुछाणो कयो त कराची डिवीजन में घणनि ॾींहंनि में इलेक्शन कराए सघिजे थी। इलेक्शन कमिश्नर उन ते वरंदी ॾिनी त 15 ॾींहंनि अंदरि इलेक्शन कराए सघिजे थी। इन हवाले सां अॼु मुख़्तलिफ़ धुरियूं पिण अदालत में पेश थियूं, पर पीपल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी ते अपोज़िशन जूं जमातूं इहो इल्ज़ाम हणंदियूं रहियूं आहिनि त पीपल्स पार्टी नथी चाहे त सिंध में बलदियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो मुकमल थिए। इन हवाले सां हैदराबाद डिवीजन ऐं कराची डिवीजन में बलदियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो अञा ताईं रोलड़े जो शिकार आहे। वाज़ रहे त इन हवाले सां अदालत पारां फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो आहे। इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जे महिमान जॉइन कयो आहे, तारीफ़ कराईंदी लाइ पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली ग़ज़ाला साहिबा असां सां गॾु आहे। ग़ज़ाला भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। शहजाद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। ग़ज़ाला, छा चवंदो अॼु सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी पिण थी ऐं अदालत जा तमामु सख़्त रिमार्क्स हुआ त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुमनि ते अमल छो नथो कयो वञे। IG सिंध खे तलब कयो वियो, एडवोकेट जनरल सिंध आयो, इलेक्शन कमिश्नर आयो, सभिनीनि पारां पंहिंजा मौक़िफ़ जेके आहिनि से रखिया विया, पर पीपल्स पार्टी ते इहो इल्ज़ाम लॻंदो रहियो आहे त पीपल्स पार्टी नथी चाहे त सिंध में बलदियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो मुकमल थी सघे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिन तमामु अहम जेको इशू अॼुकल्ह हले पियो, पहिरियों इशू त हुयो त असां वटि जेका सैलाब ऐं बारिशनि जो हुयो जंहिंसां तबाहकारी थी सॼी सिंध जी। इलेक्शन जे लाइ असां हिकिड़ो मरहलो बिल्कुलु असांजी पीपल्स पार्टी अहिड़ो कोई बि जवाज़ पेश कोन कयो त असांजो जेको पहिरियों मरहलो उन में इलेक्शन थी आई, जंहिंमें 3 डिवीज़न हुयूं, नवाबशाह, सखर ऐं लाड़काणो। उते इलेक्शनूं थी चुकियूं आहिनि ऐं बाक़ाइदा सुठे तरीक़े सां असांजी हुकूमत फुल कोऑपरेट कयो। उन खां पोइ यकदम बारिशूं शुरू थी वियूं, इलेक्शन ख़तमु थी त कराची में अॻु में बारिशूं शुरू थी वियूं। इन बारिशनि जे ई करे सभिनी इहो कयो त असां वोट न ॾेई सघंदासीं, अवाम न निकिरी सघंदो, इन करे पोइते कई वई इलेक्शन। वरी ॿीहर जेके तारीख़ूं आयूं त सिंध हुकूमत 3 महीननि जे लाइ चयो त असां जेका फोर्सिस आहे उहा उन पासे ॾे जेके असांजे ॿियूं आहिनि ॿिया ज़िला उते बारिशुनि जाते तबाही थी ओॾे ई आहिनि, इन करे इलेक्शन जा जेके फोर्सिस आहे, पुलिस हूंदी आहे ऐं रेंजर्स बि हूंदी आहे, उहे उते पहुची न सघंदा। त इन करे 3 महीननि जे लाइ उन्हनि विया हुया सभु इलेक्शन कमीशन ॾे बि ऐं कोर्ट में बि, ऐं एडवोकेट जनरल बि इहो चयो त असांखे कोई एतिराज़ु न आहे, इलेक्शन भली थियनि, अॼु थिए सुभाणे थिए, कोई एतिराज़ु न आहे, पर कुझु इशूज़ आहिनि। त इन करे सिंध हुकूमत चयो त असां ज़ाहिर उहा हुकूमत ऐं पुलिस जी ज़िमेदारी आहे सॼी इलेक्शन खे संभालणु। इलेक्शन कराईंदी त जेका इलेक्शन कमीशन, बाक़ी ज़ाहिर ॿाहिरि फोर्सिस बि अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु थिए या उते पुलिस या रेंजर्स न पहुची सघनि, त इन करे सिंध हुकूमत चयो त 3 महीननि जो गैप कयो वञे। त 3 महीना अञा पूरा न थिया आहिनि, 3 महीना डिसंबर में ई पूरा थींदा, अक्टूबर, नवंबर, डिसंबर 3 महीना पूरा अञा न थिया आहिनि, उहो कंप्लीट थींदा त बिल्कुलु जेका तारीख़ हुकूमत अञा डिसंबर ताईं इन मूड में न आहे त मकानी चूंडूं थियनि। ॾिसो अदी हैदराबाद डिवीजन जी सूरत हाल अञा ख़राबु आहे, छो जो हेॾे टंडो आदम, टंडो अलया, टंडो जाम इन पासे ॾे, बाक़ी कराची में केॾीमहिल बि इलेक्शन थी सघे थी, असांखे कोई एतिराज़ु न आहे, पर कराची में इहो आहे अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां सिंध हुकूमत बि ॾिसंदी त असां उते पूरा पहुची सघंदासीं या न। ठीक, शहजाद साहब गुफ्तगू आपने सुनी। दिसंबर तक ग़ज़ाला का कहना था कि वो नहीं करा सकते, उन्होंने ये बात कह दी है कि 90 डेज थी, 3 महीने तक अभी वो इस पोजीशन में नहीं है। हैदराबाद डिवीजन के हवाले से उनका मौक़िफ़ है कि हैदराबाद डिवीजन में सूरत हाल खराब है,
سیلاب کے حوالے سے کراچی ڈویژن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آج سندھ ہائی کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہوئی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور چیف الیکشن کمشنر سندھ اور آئی جی سندھ اور رینجرز کے اعلیٰ حکام کو بھی طلب کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں اور ہمارا موقف جو ہے وہ شروع سے یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں بلدیاتی. جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے صحیح جمہوریت اور جمہوریت کی جڑیں پاکستان میں مضبوط نہیں ہوں گی. اب پرابلم یہ آتی ہے، ان کے پاس تو 100 بہانے، کبھی پولیس کا بہانہ ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر، تو کبھی فلڈ کا، تو کبھی کرونا کا، تو کبھی کس کا، تو کبھی کس کا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بہانے چلتے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ کسی صورت یہ سیریس نہیں ہے کہ انتخابات ہوں. پولیس والے ان کو سندھ میں اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہی پولیس والے یہ اسلام آباد بھیجنے کو تیار ہیں. وہاں پر ہزاروں پولیس والے بھیجنے کو تیار ہیں، یہاں پر انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سندھ کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک بلدیاتی نمائندہ اپنے طور پہ اپنے حلقے کی، اپنے ایریے کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، تو یہ جو ابھی 15 سے 20 لوگ ہیں سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے پورا سندھ چلا رہے ہیں، یہی ہوتا رہے گا. دیکھیں، ہمیں یہ بغض پی ٹی آئی میں، بغض کراچی میں، بغض اور بغض ڈال لیں، یہ پورے سندھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ سر حیدرآباد میں سیلاب ابھی آ گیا. سیلاب سے پہلے تو ان کو کرانے چاہیے، انہوں نے نہیں کرائے، مرحلہ وار کر دیے. پھر ابھی جو میری نالج ہے، مجھے پلیز آپ میری تصحیح کر دیجیے گا، پہلے بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے، ان کی نوٹیفیکیشن نکالے ابھی تک. یہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ایک شرجیل مہمان نے اس کو ایک اتھارٹی دے دی ہے، اس کا مرچہ وہاں ہے، وہ ایک غیر سیاسی بندہ بری طرح شکست کھایا تھا، جس کو عوام نے مسترد کر دیا تھا، اسے پورے کراچی کے سر کے اوپر مسلط کر دیا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 5 سے 6 منسٹرز ہیں جن کی منسٹریاں چینج ہوتی رہتی ہیں. کبھی کہتے ہیں آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا، تو یہ نہیں کہ اس سے منسٹری واپس لینے کے بعد اس کو سائڈ پہ کر دیں، کسی نئے بندے کو دے دیں. حال یہ ہوتا ہے کہ یہ منسٹریاں کیا کہ میوزیکل چیئر کی طرح گھومتی رہتی ہیں. کیونکہ کیسے سندھ کا نظام چلے گا؟ آپ الیکشن کی بات کریں، منسٹروں کو چھوڑیں سر، جواب تو صحیح دے ہی کون. میں شرجیل میمن کے پاس جاؤں، ایک عام آدمی منسٹر تک ان کی ایکسس ہے؟ یہ تو کسی سے ملتے نہیں ہیں. یہ ابھی کورٹوں کی بات کریں. اب شرجیل میمن روز ایک ڈائلاگ مارتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا بلٹ ٹرین چلائیں گے. کیا قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ پہلے گٹر کے ڈھکن تو لگا لیں، یہ پہلے روڈ تو بنا لیں، انفراسٹرکچر کو صحیح کر لیں، پانی دے دیں، ہیلتھ دے دیں. شہزاد صاحب، لیکن آج جو طلبی ہوئی ہے، غزالہ کہہ رہی ہے کہ آپ منسٹروں کی بات کر رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے موضوع پر ہی بات کی جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آئی جی سندھ سے جب میری بہن ہے، غزالہ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ میں ان کے ساتھ جب بھی بیٹھا ہوں میں ان کی بڑی عزت احترام کرتا ہوں، اور غزالہ بھی بیچاری مجبور ہے. ان کو پتا ہے جو کچھ غلط ہو رہا ہے، جو سندھ میں سیلاب جان کے ساتھ ہوا، جو سب کچھ ہوا، ان کی اپنی پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، ان کے منہ بند کیے ہوئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ سندھ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک. اچھا شہزاد صاحب، کیا کہیے گا، کیونکہ آئی جی سندھ نے کہا کہ ان کے پاس جو فورس ہے 1,18,000 ہے، ان کے پاس مکمل فورس ہے. 3,000 کی جو نفری ہے وہ ایکسپو سینٹر میں مقرر کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر سندھ سے بھی عدالت نے پوچھا کہ کتنے دنوں میں الیکشن کرائی جا سکتی ہے، انہوں نے 15 ڈیز کا ٹائم دیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر عدالت حکم کر دیتی ہے تو پھر تو مجبوری بن جاتی ہے صوبائی حکومت کی، پیپلز پارٹی کی، ان کو تو پھر ہر حال میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانے ہی پڑیں گے. دیکھیے، اس میں 2 سے 3 چیزیں. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے. کیا دنیا بھر میں کہیں ایکسپو ہو رہی ہوتی ہے؟ کہ دنیا بھر میں خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفات ہو رہی ہوتی، کبھی وہاں الیکشن ڈیلے ہوتے دیکھیں. انہوں نے ایک جمہوریت کا ایک پروسیجر ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کیا انہوں نے کبھی بھی یہ دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی پولیس نہ ہونے کی وجہ سے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہو جائیں؟ دیکھیے، ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے، سندھ کا سوچنا ہے، سندھ کے تمام شہروں کا سوچنا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی پرائیورٹی الیکشن ہے ہی نہیں ہے. یہ جمہوریت کے سب سے چیمپئن بنتے ہیں، یہ جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ جمہوریت چاہتے ہی نہیں ہے پروان چڑھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بلدیات کے منسٹر ناصر حسین شاہ ہیں، تو خود ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن لڑ کے آئے تھے انٹیریئر سندھ سے گوٹ کی چکر سے. تو وہ کیوں ان چیزوں کے خلاف ہیں؟ وہ کیوں ان چیزوں کو نہیں مانتے؟ وہ کیوں انتخابات کے خلاف ہیں؟ کہ جتنے اس وقت آپ دیکھ لیں، ہمارے پرانے سیاستدانوں کو دیکھ لیں 80s 90s کے اندر، وہ سب بلدیاتی نظام کی وجہ سے آئے. اس سے پہلے بھی ہوا. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا
کہ یہ کراچی نہیں سنبھال سکتے 3 سے 4 لوگ, یہ قطن نہیں سنبھال سکتے, نہ میرا حیدرآباد شہر سنبھال سکتے ہیں, نہ نواب شاہ, نہ لاڑکانہ. یہ انتخابات نہیں کرائیں گے تو بڑے افسوس کا وہ ہے. اور دوسری بات یہ, انہوں نے تو ہمیشہ, میری معزز عدالتوں نے جب بھی فیصلے دیے ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی بہانہ. شہزاد صاحب میرے ساتھ رہیے گا, میں اسی پہ غزالہ کا موقف لے لوں. جی غزالہ. دیکھیں شہزاد بھائی بالکل منجو بھائی ہے, پارٹی अलॻि या उन सां न फ़र्क़ु पवंदो आहे, हिक ॿिए जी इज़त कंदा आहियूं असां. ऐं असेंबली में सभई मतिलबु जॾहिं जंहिं पार्टी में हूंदो हिक ॿिए जी इज़त करणु घुरिजे. बहरहाल अदा जेका ॻाल्हि कई शहज़ाद, त सिर्फ़ु मिनिस्टरनि ते तनक़ीद कई वई. ऐं जेको पहिरियों मरहलो थी वियो हुयो उहो शहज़ाद भाई खे जीअं मूंखे चई त ख़बर न आहे, त मां बि चवां थी शहज़ाद भाई खे ख़बर न आहे. उहो इन करे इलेक्शन कमीशन वारनि ई रोकियो हुयो त जेसि ताणी ॿियो फेज़ न थींदो, छो जो ॿियो फेज़ जी बि तारीख़ अची वई हुई. जेके हुननि जा नोटिफिकेशन निकिरणा हुया या उन्हनि ओथ खणणो हुयो, सो उहो उन्हनि चीफ इलेक्शन कमीशन इहो ई चयो हो त शहज़ाद खे ख़बर हुजे अलाए न आहे, त उन्हनि चयो जीअं असां ॿिए मरहले खे कंप्लीट करे ऐं पोइ गॾिजी सभिनी जो ओथ खणाईंदासीं, नोटिफिकेशन कढंदासीं. उहो उसमें शहजाद भाई हम सिंध वालों की हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं है. और जिस तरह आपने नासिर शाह साहब के लिए कहा, वो भाई हैं आपके भी मेरे भी, नासिर शाह कॾहिं बि न चयो आहे तव्हां सां वेही अची अगरि तव्हां उनखे घुरायो या टीवी टॉक ते या किथे बि, त कॾहिं बि न चयो अथई त असां इलेक्शन नथा चाहियूं. या नासिर शाह बिल्कुलु रूट लेवल खां आया आहिनि ऐं उहो तमामु बहितरीनु इंसान आहिनि, बहितरीनु मिनिस्ट्री हलाइनि पिया. लेकिन इहे ॻाल्हियूं तव्हां ॾिसो, MQM बि पंहिंजा ग्रीवेंसिस अॼु ॾिना आहिनि. मेन त उहे आहिनि त असांखे एतिराज़ु आहे. असां जेके तरमीमूं चयूं, असांजी पॉपुलेशन ते सेंसिस ते एतिराज़ु आहे, उन्हनि ते एतिराज़ु. बहरहाल उहो उन्हनि जो मौक़ुफ़ आहे. उन्हनि जो मौक़ुफ़ पहिरियां बि इहो हुयो MQM वारनि जो, जॾहिं फर्स्ट फेज़ पियो थिए त असां इलेक्शन कराईसीं, असां इलेक्शन कमीशन सां साथ ॾिनोसीं. असां जमहूरियत जो मौक़िफ़ आहे, MQM जो जेको इहो दलील आहे या जवाज़ आहे, उहो इन करे आहे जो उन्हनि खे ख़ौफ़ थी वियो आहे त हाणे जेका कोरंगी में पंहिंजी सीट हाराए विया, PTI जी मक़बूलियत आहे, PTI जो वोट बैंक घणो आहे सिंध जी राजधानी कराची में, त उन्हनि खे एतिरियूं सीटूं न मिली सघंदियूं. ॾिसो अदी, इलेक्शन में त बीहणो त आहे न. अगरि तव्हां सियासी कुवत आहियो, जमहूरी कुवत आहियो, सियासत में आहियो, पॉलिटिकल पार्टीज़ आहियो, तव्हांखे हार जीत इलेक्शन में थींदी आहे. त बाक़ी इहो ख़ौफ़ त PTI इहे इलेक्शन खटे वेंदी या पीपुल्स पार्टी इलेक्शन खटे वेंदी, ईअं त न आहे न. तव्हांखे बीहणो आहे. हा, अगरि इलेक्शन कमीशन ऐलान थी करे त भई इलेक्शन असांखे हफ़्ते जे अंदरि कराइणी आहे, सुभाणे कराइणी आहे, त असांखे सिंध हुकूमत खे कोई एतिराज़ु कोन्हे. उहो असां गॾिजी बीहंदासीं. पर कुझु ग्रीवेंसिस इहे हुया त पुलिस जो असां वटि नफ़री घटि आहे. इन हवाले सां IG जो बि मौक़ुफ़ अॼु IG खे बि घुरायो वियो. इहा ई ॻाल्हि कई वई त इलेक्शन जे असां जेॾीमहिल बि कराइनि इलेक्शन असां तयारु आहियूं. बाक़ी इहो न त मिनिस्टरनि ते, हिन महिल मिनिस्टरनि जी ॻाल्हि हले ई कान पई. हिन महिल तव्हांजी इलेक्शन, अगरि तव्हांजी कोर्टूं ॿुधनि थियूं, चीफ जस्टिस ॿुधे थो, हाई कोर्ट वारा ॿुधनि था. शहजाद साहब जो इहो चवणो हो त पोइ जेकॾहिं माण्हुनि खे कम पवंदा त माण्हू पोइ छा बल्दियात जे मिनिस्टर वटि वञे? ॾिसो, बल्दियात मिनिस्टर त हर टाइम ते हाज़ुर हूंदा आहिनि. असांजी जमहूरी क़ुवतूं आहिनि ऐं जमहूरी बंदा. असां जमहूरियत लाइ वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं इंशाअल्लाह अॻिते बि जमहूरियत सां साथ हूंदासीं. बाक़ी इलेक्शन जेॾीमहिल बि, असां हाणे बि इलेक्शन जे लाइ तयारु हुयासीं, पर पाणे सभु MQM वारा सभई विया त असांखे इलेक्शन न खपे. हाणे बि इलेक्शन अगरि चवंदी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन वारा सुभाणे करणु चाहिनि त असां सुभाणे खां तयारु आहियूं. शहजाद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी. आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि MQM के वकील के जो दलाइल थे आज, वो भी नहीं चाहते कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद मुमकिन हो सके, क्योंकि MQM के वकील का जो दलील था वो ये था कि कानूनी तरामीम के लिए सिलेक्ट कमेटी बन चुकी है और MQM भी इस पर काम कर रही है. क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये, वो सिलेक्ट कमेटी का मजाक है. वो तो पीपल्स पार्टी ने एक मजाक किया था और MQM उसकी आलाकार है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल को PTI खड़ी हो जाए और वो क्या मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे मुकर्रर वक्त में, तो क्या ये कोई जवाब है कि हमने तैयारी नहीं की, हमें कुछ चीजें करनी है, फला कर? भाई ये उस वक्त की जाती है जब इलेक्शन से पहले की जाती हैं. ये तो तरीकाकार नहीं है 3 दफा इलेक्शन की डेट अनाउंस करके उसको वापस ले ली. MQM तो माजर के साथ बराए फरोख्त हो चुकी है. MQM ने तो अपना जमीर बेच चुकी है. MQM ने तो गवर्नरशिप के ऊपर और दूसरी मिनिस्ट्रीज के ऊपर अपने आप को बेच दिया है.
मैं इसमें कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं करता कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों मिलकर सिंध सूबे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक यही सूबे को नुकसान पहुंचा रहा है, एक शहीद सूबे को पहुंचा रहा है। दोनों ने अब बंदर बांट की हुई है। वो कहते हैं तुम इधर रहो, हम उधर रहे, और जब वक्त आता है तो सिंध काट का खेलना शुरू कर देते हैं। भाई सिंध से मुखलिस हो ना तो सिंध के वालों का सोचो, सिंध के गरीब का सोचो, सिंध में एजुकेशन बेहतर हो, हेल्थ बेहतर हो, सिंध के लोगों को उनकी दहलीज के ऊपर इंसाफ मिले। ये क्या है कि अगर किसी को लाड़काना में कोई प्रॉब्लम है, वो सीएम हाउस आएगा, वो यहाँ सिंध सेक्रेटरी रहेगा, वो मिनिस्टर के घर के बाद चक्कर लगाएगा। अरे भाई उसके वाइस चेयरमैन को, चेयरमैन को और वहां के मेयर को इतना ताकतवर करो कि वो अपने गांव के अंदर, अपनी तहसील के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको पता हो मेरे हल्के का मसला हल करने के लिए बंदा मौजूद है। देखिए हमें प्रॉब्लम यही तो सारी चीजें हैं। आज मुझे कहते हैं पंजाब आगे निकल गया, केपीके आगे निकल गया, मेरा सिंध सूबा क्यों पीछे है? इसी वजह से पीछे है कि हमने ताकत को जो 15 से 20 लोगों के दरमियान रखा हुआ है और उसको भी चला रहे हैं जरदारी साहब फ्लावर हाउस से। ये जमहूरियत का ये तरीका है। मुझे आप एक बात बताया ना, मीरपुर माथेरों में थर से, मीरपुर खास से क्या नासिर हुसैन शाह या दूसरा कोई मिनिस्टर उनके एक्सेस में होगा? देखिए हम शहर वालों के लिए एक्सेस नहीं है, तो ये बेचारे जो इतने दूर से आते हैं उनके एक्सेस होगा। हम बल्दियात को हमने मजाक बना दिया है, हमने इंतखाबात को मजाक बना दिया है। कभी क्या बोलते हैं तो कभी क्या बोलते हैं, इनका जो दिल चाहे बोलते हैं। ये वही वादा है जो 15 साल के बाद आज 100-150 बसें चल रही हैं। 15 साल तक ये हमें बोलते रहे 10,000 बसें आ रही हैं, 8,000 आ रही हैं, फिर 6,000 आ रही हैं, फिर 3,000 आ रही हैं, आखिर में बोला 1,000 आ रही हैं, और आई कितनी? तो कहने का मकसद ये है कि हमें प्लीज इन सिंध के अवाम पे रहम खाएं, सिंध का सोचें, वरना मेरा ये सूबा इतनी तकलीफ, मुझे आप बता देना कराची में कौन सी ऐसी सड़क है जो बनी हुई है? मैं तो रोज वहां से गुजरता हूँ ना। तो इसी तरह मेरा दूसरा सिंध सूबे का भाई अपने एरिया से गुजरता है तो उनको अच्छी तरह याद करता है। इनको पता है 2023 में इंशाल्लाह कराची जा केतरी रोड पे न जानो थी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया हमें प्रोग्राम में। नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे भी जारी रखंदासीं। वक्त थियो आहे मुख़्तसिर वक़्फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन ही मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ डॉक्टर उसामा रज़ी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सिंध हाई कोर्ट में आज हेयरिंग हुई है, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ जो फरीक़ैन हैं उनको तलब किया गया, सबके अदालत ने दलाइल सुने और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन जमात इस्लामी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना था, उनके वकला का, कि सिलेक्ट कमेटी बन चुकी है तरामीम के हवाले से, तो फिलहाल वो भी नहीं चाहते कि फौरी इनकाद हो सके बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का। जी बहुत शुक्रिया। ये अवाम का एक बहुत ही बुनियादी हक है जिससे मुसलसल। डॉक्टर साहब जरा लाउडली बात कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझ तक। जी मैं कह रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका कि ये एक बुनियादी अवामी हक है जो 2 साल से सिंध हुकूमत ने इससे अवाम को महरूम रखा हुआ है, और मजबूरन जो है अवामी क़ुव्वतों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और अदालत से ये दरख्वास्त करनी पड़ी कि ये हुक्मरान अवाम को उनका बुनियादी जमहूरी हक नहीं दे रहे हैं। लिहाजा अदालतों ने भी के ऊपर, इससे पहले भी अदालतों ने ये हुक्म दिया था कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, और आज जो अदालत ने फैसला महफूज किया है, हमें उससे यही तवक्को है कि अदालत का जो फैसला होगा वो अवाम के बुनियादी हुकूक की बहाली के हक में होगा। ये जो एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी है जिन्होंने एक तवील अरसे से सिंध के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की हुई है, ये अवाम को बुनियादी हक से महरूम रखने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तराश रहे हैं। पहले इन्होंने बारिश का बहाना तराशा, फिर इन्होंने सैलाब का बहाना तराशा, फिर इन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो सैलाब ज़्यादा लोगों की मदद कर रही है, और जब अदालत ने उनको बुलाया कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पे पुलिस ये काम कर रही है, रेंजर्स को अदालत ने तलब किया, पुलिस के हुक्काम को और ब्यूरोक्रेसी के लोगों को अदालत ने तलब किया और उनसे वजाहत मांगी कि आप बताएं तो सही, उसकी तफसीलात तो दें कि ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर जो तो आंखों से इंसानों को नजर नहीं आ रहा। लिहाजा आज की इस पूरी कार्रवाई के बाद हमें तो अदालत से ही तवक्को और उम्मीद है कि वो इन हुक्मरानों के
اس بہانے بازی کے طرز عمل کو مسترد کرے گی اور عوام کو ان کا بنیادی حق 2 سال ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشن ڈیو ہیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ یہ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا یا سیلاب کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ سیلاب اور بارش کا مسئلہ تو ابھی کا ہے, 2 سال سے یہ نہیں کروا رہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سن 70 کے بعد سے مسلسل یہاں پر راج کر رہی ہے. اس کے دور حکومت میں کبھی بھی عوام کو بنیادی جمہوری بلدیاتی حق نہیں ملتا. اور میں ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمیشن ہے, یہ الیکشن کمیشن حد درجے عوام دشمن الیکشن کمیشن ثابت ہوا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے اور اس کی مرضی سے اور اس کی ہدایت کے اوپر یہ یہاں پہ سارے کام اور اقدامات کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایلیگیشن آپ کس بنیاد پر لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی کہ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ جو ہے وہ دوسرا وہ مکمل ہو سکے؟ ان ایلیگیشنز کی الزامات کی وجوہات کیا ہیں؟ نہیں, یہ الزام نہیں ہے, یہ ایک کھلی حقیقت ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا جی کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ 2019 کے بعد سے ختم ہو گئے ہیں. 2015 میں آخری بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد 2019 اور 20 تک ان کی مدت ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ انتخابات ڈیو ہیں, لیکن یہ نہیں کروا رہا ہے. انہوں نے کیا کہ بلدیاتی اختیارات کے اوپر ڈاکہ مارا. انہوں نے قانونی طور پہ یہ تمام بلدیاتی اداروں کو بھی ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور صوبے میں ایک ایسی آمریت کی شکل اختیار کر لی ہے کہ اوپر سے جو عوام کے حقوق تھے, جو مرکز سے وفاق سے عوام کو میسر آنے تھے صوبائی خود مختاری کی صورت میں, وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے درمیان میں روک لیے ہیں. اور نیچے سے جو عوام کو پہلے سے بنیادی حقوق حاصل تھے وہ ان سے قانون کے ذریعے مختلف قانونی ہتھ کنڈوں کے ذریعے وہ چھینتے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ صوبائی سطح کے اوپر ایک مخصوص طبقہ جو یہاں پر حکمراں کی حیثیت سے مسلط ہے اور وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا طبقہ ہے, سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں مرتکز ہو گئے ہیں. آپ کو یہ بات یاد ہوگی, یہ الزام کی بات نہیں ہے. ہم نے 1 مہینے سندھ اسمبلی کے باہر اس آمرانہ سول آمریت کے خلاف ہم نے مسلسل دھرنا دیا, بات چیت کی, ان کو سمجھایا, ان کو راغب کیا اس بات کے اوپر. انہوں نے ہمارے ساتھ اس کو تسلیم کیا اس بات کو. ٹیلی ویژن پہ آ کے جو ہے ناصر حسن شاہ صاحب نے باقاعدہ جو چیزیں تسلیم کی تھی ان کا اعلان کیا کروڑوں انسانوں کے سامنے. وزیر اعلیٰ صاحب نے جماعت اسلامی کے دفتر میں آ کے میڈیا کے سامنے علل اعلان کہا کہ ہم ان سارے مطالبات کو صحیح سمجھتے ہیں, ان کو تسلیم کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کریں گے. کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور انہوں نے MKM کے ساتھ ایک نیا ڈول جو ہے وہ معاہدہ ڈال دیا. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ سازشوں کے تانے بانے اتنی دور تک پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا موقف آ گیا, میرے ساتھ رہیے گا. غزالہ سیال میرے ساتھ ہیں, ممبر سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میں چاہوں گی کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ان کے جوابات غزالہ صاحبہ سے لوں. جی بالکل جوابات ॾियण जे लाइ तयार आहियां. اردو میں ॻाल्हाए सघो था डॉक्टर साहब जी सहूलियत जे लाइ, नो इशू. असांजी जेका सिंध हुकूमत आहे, जेको डॉक्टर साहब चवनि था, असांखे कोई भी पीपुल्स पार्टी खे एतिराज़ कोन्हे को. जॾहिं असां फेज़ 1 कराए आयासीं असां फुल सपोर्ट कईसीं इलेक्शन कमीशन जी. सेकेंड फेज़ जे लाइ बि असां बिल्कुलु तयारु हुयासीं. ऐं 1-2 ॾींहंनि जे अंदरि बारिशूं थियूं ऐं उन्हनि बारिशनि जे ई करे सभई विया हुया कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी. सभई पाण जमायत इस्लामी भी हुई, PTI वारा भी हुया, सब एग्री हुआ MKM वारा. त MKM वारनि जो त अञा ॿिया बि ग्रीवेंसिस आहिनि, पर मां इहो ई ॿुधायां थी त उहो इन करे त बारिशूं तमामु सख़्तु थियूं हिते कराची में. असांजे पासे ॾे त जेके ॿिया ज़िला फेज़ 1 में त एॾो कोन हुयो. जॾहिं फेज़ 1 ख़तमु थियो ऐं हिते बारिशूं शुरू थी वियूं ऐं बारिशनि जे ई करे पहिरियों जेका तारीख़ ॾिनल हुई बारिशनि जे ई करे पोस्टपोन थी. उहा पाण खे बि अदा खे बि ख़बर हूंदी. उन खां पोइ जेका तारीख़ूं आयूं उन में बिल्कुलु अगरि तव्हांखे सिंध जे असांजे सिर्फ़ु कराची सां मोहबत आहे, कराची भी असांजो आहे, अगरि तव्हांखे सिंध जे ॿियनि ज़िलनि सां मोहबत हुजणु घुरिजे त उन जी सूरत हाल वाक़ई ख़राबु हुई. उतां कोई माण्हू अची वञी न पियो सघे. असांजो पुलिस, असांजी रेंजर्स उन्हनि खे संभालियो वञी.
उते वञी उन्हनि जो पाणी मां कढियनि, घर तबाह थी विया उहो बि हुआ। हाणे 2 साल अॻु में 2 साल उहो त करोना जे करे बंदि हुयो न। 2019 में मुंहिंजे भाउ खे विसरी वियो आहे अलाए छा, त 2019 खां वठी 2022 जे स्टार्ट में करोना जेका असां ते हुई, जेका आफ़त आयल हुई, वरी ॿी आफ़त बरसाति जी थी आफ़त, जंहिंसां तबाही तमामु घणी थी। असां कोई परे कोन था थियो इलेक्शन खां। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी इलेक्शन सुभाणे इलेक्शन कराइनि त असां सुभाणे बि इलेक्शन कराइण जे लाइ तयारु आहियूं। अगरि मुंहिंजो भाउ हा, बाक़ी अॼु कोर्ट में विया हुआ त उते MQM जा बि इलाही उते मुतालबा हुया त असांजा हिकु त सेंसस ते एतिराज़ आहे, ॿियो असां पंहिंजूं तरमीमूं इहे विधियूं आहिनि, कमेटियूं ठाहियूं आहिनि, उन्हनि में असांजा एतिराज़ात आहिनि, उन्हनि ते अमल कयो वञे। अगरि इलेक्शन कमीशन, छो जो असां वरी उहा ई ॻाल्हि थी कयां त फोर्सिस, मुंहिंजे भाउ खे ख़बर हुजणु घुरिजे, फोर्सिस ओॾे ई हुयूं। हाणे जेॾीमहिल बि इलेक्शन चाहींदा, असां इलेक्शन खां कॾहिं बि परे न भॼंदासीं, छो जो असां जमहूरी पार्टी आहे असांजी पीपल्स पार्टी, ऐं कॾहिं बि एतिराज़ न कयो आहे। असां चऊं था त इलेक्शन थिए ऐं बिल्कुलु भरपूर तरीक़े सां। बाक़ी कुझु ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंजे करे सिंध हुकूमत 3 महीननि जे लाइ इलेक्शन कमीशन खे, कोर्ट में बि इहो ई चयो आहिनि त असांखे 3 महीननि जी मोहलत ॾिनी वञे, ताकी असां सही तरीक़े सां पंहिंजे जेके पुलिस आहे, रेंजर्स आहे, उनखे कराची में इलाही मसाइल आहिनि, लॉ एंड ऑर्डर जा मसाइल आहिनि, ॿियूं आहिनि, उन करे बाक़ी इलेक्शन खां असां कोन था भॼूं। ऐं इलेक्शन अगरि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन जो ऐलान कंदी सुभाणे ई कराए त असां सुभाणे बि कराइण जे लाइ तयारु आहियूं। दिसंबर ताईं तव्हां रेडी न आहियो? ॾिसो, मां उहो ई चयो त अहिड़ा काई ॻाल्हि कान्हे, असां तयारु आहियूं इलेक्शन जे लाइ। असांजी वर्क हले थी, असांजा नुमाइंदा जेके बीठा आहिनि उहे वर्क कनि था। बाक़ी इलेक्शन ते ॿीहर जेको ऐलान थियो उन में बि असांजा हिते जलसा कयासीं, हिते वियासीं, हिते पंहिंजी कंपेन शुरू कईसीं, सभु कुझु शुरू कयोसीं। अगरि तव्हांखे या MQM खे इन्हनि खे एतिराज़ आहे त उहो अॼु सुप्रीम कोर्ट जो अॼु या सुभाणे जेको बि फ़ैसिलो ईंदो, असां तयारु आहियूं। असां इलेक्शन सुभाणे इलेक्शन थिए त असां पीपल्स पार्टी इलेक्शन कराइण लाइ तयारु आहे। ठीक गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपने सुनी। आपके जवाब के बाद मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। गजाला साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी को अगर सिंध हाई कोर्ट आज हुक्म देती है तो वो आज ही इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि दिसंबर तक वो नहीं, उनको लगता कि बहुत सारे मामलात हैं, दिसंबर तक वो नहीं करा सकते। ये उन्होंने लिख के दिया है कि 90 डेज तक, 3 महीने तक कम से कम अभी इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। अगर उनको हुक्म मिलता है अदालत की जानिब से तो वो बलदियाती इंतखाबात कराने में उनको कोई मसला नहीं है। और जहां तक बात थी 2 साल की, तो उन्होंने कहा 19 से लेकर 22 तक आप देखेंगे बहुत सारे मामलात, कोविड हो गए, इकोनॉमी के मामलात हो गए, फिर सैलाब की सूरत हाल हो गई, तो इसमें पीपल्स पार्टी का उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। जी बिल्कुल। ये देखिए, पिछले दिनों हमारे एक सूबाई वजीर साहब ने ये बात कही थी कि हम तो इंतखाबात करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो इत्तेहादी पार्टी है MQM वो नहीं चाहती इंतखाबात करवाना, इसलिए हमने भी इंतखाबात को मौखर करने की दरख्वास्त दी है। तो ये सारे बयानात चुगली खा रहे हैं कि जो असल मसला है वो ये है कि कराची जो है, चूँकि सिंध का सबसे अहम शहर है और कराची की मेन स्ट्रीम सियासत में इस वक्त हुक्मरान जमातों को अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो या MQM हो। चुनांचे उसका नतीजा यह है कि MQM पीपल्स पार्टी पर रखकर और पीपल्स पार्टी MQM पर रखकर अपनी फेस सेविंग्स कर रही हैं और ये आवाम को बुनियादी हक नहीं दे रहे हैं। आखिर इस शहर में जो इतने बड़े पैमाने पर रेंजर्स मौजूद है, ये किस मर्ज की दवा है? और इनकी मौजूदगी में भी अमन व अमान नहीं है। ये इतने बड़े पैमाने पर जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ये किस मर्ज की दवा है? इनकी मौजूदगी में भी अमन व अमान नहीं है। इनकी मौजूदगी में लोगों को जमहूरी हक नहीं मिल सकते, तो फिर आखिर ये किस काम के लिए यहाँ पर आवाम के टैक्सों से पल रहे हैं और ये सब कुछ यहाँ पे इनका तामझाम यहाँ पे जारी है। लिहाजा आवाम बजा तौर पे समझते हैं कि ये इदारे अपने फ़राइज़ अंजाम दें और बखूबी बाहसन अंजाम दें और आवाम को जमहूरी हुकूक की फराहमी में इनका पूरा किरदार, वाज़े किरदार नज़र आना चाहिए। और सिर्फ ये कह देना, ये किसी भी नौइयत का लेटर जारी कर देना कि हम आज कह दें कि हम जो है 3 महीने तक इंतजाम नहीं कर सकते, कल कहें कि हम करवा तो सकते हैं लेकिन ये कि MQM नहीं चाहती, तो ये देखें बहानेबाजियां ही नजर आ रही हैं आवाम को। और बुनियादी बात ये नजर आ रही है कि मेन स्ट्रीम शहर में इन दोनों पार्टियों का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। यहाँ पे बज़ाहिर जो हमें जो सर्वेस भी कह रहे हैं वो यही है कि जमात इस्लामी और PTI
मेन स्ट्रीम शहर में इस वक्त नुमाया पार्टियां हैं जो हमारे हुक्मरान तबकों को कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। ग़ज़ाला तव्हांजी वॾी महिरबानी ताजो के प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो। नाज़रीन, बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां सिंध हाई कोर्ट में अॼु ॿुधणी थी आहे। मुख़्तलिफ़ धुरियुनि जा दलील ॿुधण खां पोइ अदालत पारां इन मामले ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो आहे। इन ई हवाले सां जमात इस्लामी जे डॉक्टर उसामा रज़ी जो चवणु हो त इन्हनि खे ख़बर पइजी चुकी आहे त इन्हनि जो वोट बैंक हाणे कोन्हे। सूबाई हुकूमत इन ॻाल्हि खां डिॼे थी। MQM खे बि चङी तरह ख़बर पइजी वई आहे। कराची में जेको स्टेक आहे उहो जमात इस्लामी ऐं PTI जो आहे। जॾहिं त पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ पिणु ग़ज़ाला सियाल असांखे ॿुधायो। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ हो त पीपल्स पार्टी बलदियाती चूंडुनि खां कॾहिं बि इनकारी न आहे। मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि जो डिसंबर ताईं चूंडियूं नथियूं कराए सघजनि, पर उन बावजूदु जेकॾहिं अदालत हुकुम ॾिए थी त पोइ पीपल्स पार्टी सुभाणे ई बलदियाती चूंडूं कराइण में पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कंदी। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।